students, I am here with another video from the chapter of class 7 Science NCERT book. The name of the chapter is chapter number 12 of the 7th class book, and the name is Reproduction in Plants. Student, as we all know that we have completed this chapter, we have discussed about the explanation of this chapter, and we are discussing about the keywords. We have also discussed about the keywords of the chapter, and we are discussing about what we have learned. Yesterday I have also discussed about the few points related with the what we have learned, and that was the revision kind of thing, but that was a revision sort of thing. And today we'll be continuing with few more points which are left in this series. That is, there are few more points which are left in the what we have learned part. ठीक है, अब पहला कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स के लिए अभी आज हम डिस्कस करते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो. दैट इज दैट we have discussed about the types of flowers, we have discussed about the types of asexual mode of reproduction, and we have also seen about the pollination. Now pollination takes place in the plants with the help of wind, water and insects. Yes, and what are these wind, water and insect? What are these wind, water and insect? These are the agents of pollination. See, why? What is the use? What is the need of agents? They are the helpers. They behave like helpers. Okay? So they are helping in the modes of different types of the pollinations. Like cross pollination में specially help है. सेल्फ पॉलिनेशन में इतना हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, whereas cross pollination it should happen, and here in cross pollination we require some agents, we require some help, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो बहुत अलग अलग प्लेस पर है, बहुत अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं. ये फ्लावर्स हो सकता है एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से काफी दूर हो, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं. कहीं कहीं पर क्या होता है, प्लांट्स में ही पार्ट्स हैं, कुछ फ्लावर्स एक जगह में प्रेजेंट है, दूसरा फ्लावर दूसरे ब्रांच पर प्रेजेंट है, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने के लिए भी उसे हेल्प की जरूरत है. उसके पास दे डोंट हैव लेग्स टू वॉक, इजंट इट, दे डोंट हैव फीट टू वॉक. यहाँ पर एजेंट्स की काम आती है, एजेंट्स का हेल्प आता है. दे आर गोइंग टू मूव बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द एजेंट्स. वाटर है तो वाटर कुड हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑफ the pollen grains from one place to another place, या फिर air है तो air could also blow away these pollen grains from one place to another place. Okay, now we move on to the next point, that is the fusion of the male and female gamete is known as fertilization. The second step after pollination, what is the next step? Pollination का next step क्या होता है? The next step is fertilization. Okay, the next step is fertilization. Now after fertilization, this results in the zygote formation. Zygote results in the seed and the fruits formation. Okay, zygote results in the seed and the fruit formation. It forms an embryo. इसके बाद एक step होता है embryo का, and embryo will lead to the fruits and seeds. Inside the fruits we have seeds. Fusion of the male and female gamete is known as fertilization. Fertilized egg is known as zygote. Zygote gives rise to an embryo that develops into an embryo. Embryo is, you can say that it is a matured part of the zygote. Zygote से mature होकर के embryo बन जाता है. Fertilized egg is called zygote, and zygote develops into an embryo, and the fruit is the mature ovary where the ovule develops into seeds, which could also contain the developing embryo. Seed dispersal is aided again with the help of the wind, water, animals, human beings, okay, birds. तो जैसे हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था,
वैसे ही एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल भी हैं, सीड डिस्पर्सल भी हैं. So seed dispersal helps in the plants to prevent overcrowding. They avoid competition of the sunlight, water, minerals. They are invading into a new habitat. Okay, they help in the invasion on the new habitat. Okay, now this was all about what we have learned, what we have seen. This was the revision, and now I'll be moving on to the exercises of this chapter. We'll discuss the question answers. We'll be discussing the exercises of this chapter. Now the exercises are first point, fill in the blanks. Fill in the blanks is production of new individuals from vegetative part of the plant parent is known as dash. The production of new individuals from the vegetative part of the parent is called, this is fill in the blanks. Now here A part is production of the new individuals from the vegetative part of the parent is known as vegetative propagation. ठीक है. B part क्या है? A flower may have either male or the female reproductive part. Such a flower is known as either of the female. That is known as unisexual flower. ठीक है. Flower already written है. The answer is unisexual flower. The C part, flower is also not written. तो ये पूरा हो जाएगा. Yes. The transference of the pollen grains from anther to the stigma of a same or the another flower is known as pollination. Pollination. Okay. Then the D part, the fusion of the male and the female gamete is termed as fertilization. Then E part is seed dispersal takes place by means of dash, dash and dash. Wind, agents of pollination लिख दीजिए. Wind, water और insects. ठीक है. विंड, वाटर या इंसेक्ट्स हो सकते हैं. गॉट इट. तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में भी अलग से भी पूछे जा सकते हैं, जो आपके बुक के चैप्टर के बीच में से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. तो मेक श्योर दैट यू हैव रेड द चैप्टर प्रॉपर्ली. कोई भी फिलअप आए, कोई भी स्मॉल आंसर क्वेश्चन आए, कोई भी डिटेल आंसर क्वेश्चन आए 5 मार्क्स के लिए, यू आर एबल टू राइट डाउन द आंसर. And that depends upon how well you have understood the chapter. And if you have not understood the chapter, you are not able to solve the questions. You have to practice more so that you could easily solve these types of the question, whether it is a 1 mark, 2 mark or 3 mark question. Okay? Now we move on to the next point, that is the question answer of this chapter. The second question is, the second question for this chapter is, describe the different methods of asexual reproduction and give one example. So what are the modes of asexual mode of reproduction? Answer number 2. The various asexual modes of reproduction in plants are budding, fragmentation, उसके बाद आप देख सकते हैं budding, fragmentation, vegetative propagation, spore formation, फिर क्या लिख सकते हैं, vegetative propagation. ओके. अब बर्डिंग का एग्जाम्पल आप लिखिए. एग्जाम्पल आपको लिखना है. एग्जाम्पल में यू कैन राइट डाउन इन ईस्ट,
In fragmentation, you can write down algae, Spirogyra. In spore formation, you can write down the Rhizopus, या इसी को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड. Vegetative propagation takes place in potato. It takes place in radish. It takes place in the dahlia. Dahlia roots में हो सकता है, ठीक है. Ginger, onion. All these are the examples where vegetative propagation could take place. ठीक है. Give one example. We have given one example. We have discussed this. Now the third question: explain what you have understood by the sexual reproduction. So answer number 3 is, what is sexual reproduction? So the reproduction which involves the fusion of male and female gametes is known as gamete. एक ही है, is known as sexual reproduction. ठीक है, we can write on this. The events of sexual reproduction अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसमें? The sexual reproduction takes place because of the different gametes are produced in male and female reproductive parts of a flower. ठीक है, it takes place in male and female reproductive parts of a flower. Events of sexual reproduction we can write down. Events of sexual mode of reproduction in plants. इसमें आप लिख सकते हैं fertilization. Okay, we can write down pollination, followed by fertilization, followed by zygote formation, which is being followed by embryo formation, which is going to develop into seeds and fruits. ठीक है, तो ये पूरा इवेंट्स आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में कंप्लीट किया जाता है. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. नाउ आई विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज fourth question, that is the state difference between sexual and asexual mode of reproduction. Answer number 4 is the difference between asexual and sexual mode of reproduction. ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा आपको? डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं. इधर जस्ट नाउ वी हैव सीन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की क्या क्या इवेंट्स होते हैं. अभी हमें सेम उस तरह से यहाँ पर डिफरेंसेस लिखने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में वी कैन राइट डाउन द गैमेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट डाउन गैमेट्स आर required. Fine. Now the next point is the here the events could be asexual mode of reproduction takes place in root, stem, leaves. Okay, with the help of root, stems and leaves. और यहाँ पे it takes place in the
reproductive part of the plant, मतलब कि फ्लावर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स। नेक्स्ट है सेम टाइप ऑफ flowers or plants are developed। ठीक है, इधर क्या है, the variety of plants could be प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जिसमें कि एडवांस्ड नेचर होगा, एडवांस्ड फीचर्स हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स कुड इंक्लूड यहाँ पे कटिंग, लेयरिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, और इधर क्या होगा, दीज आर इन्वॉल्व। Similarly, यहाँ पे what would happen? No such types are present. Okay? यहाँ पर कोई ऐसा type present नहीं है. Okay, so this was about the differences in the section and the A-section for reproduction. Now we move on to the next point, that is the fifth answer. You can include few more points if you remember, if you know what discussion we had while explanation of the chapter, you can include those points as well. Okay? Next is sketch the reproductive parts of a flower. Question number 5. The reproductive parts of a So you can write down the stamen and pistil. ठीक है, for stamen you can make and we have pollen grains. ठीक है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं इसको. We can write down this is filament, this is anther. Okay? और आपको अगर पिस्टल बनाना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. So this is stigma, this is style, and this is ovary, this is ovule. ठीक है? This is male reproductive part, and this is female reproductive part of a flower. Okay, जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं. This is pistil. It forms pistil and it forms stamen. Okay, ये आपके reproductive parts हैं फ्लावर के, जो आपके बुक में भी drawn है. अब anthers और filament का arrangement अलग अलग होता है. Need not to go in so much details because it is the higher level of the class. I mean, when you will move on to the next few classes, you will be reading about these chapters again, and then you will be explained about the types of the anthers which are present. Okay? We move on to the next point, that is explain the differences between the self-pollination and the cross-pollination. Okay? Now again, one difference is there. Answer number 7, I think. No, this is 6th.
Self-pollination means it is the transfer of pollens from anther to stigma of a same flower. ठीक है. और अगर आपको लिखना है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollens from anther to stigma of different flower. ठीक है, डिफरेंट फ्लावर. अब नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में. सेकेंड पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन needs no agents. ठीक है, here needs agents of pollination. ठीक है, जिसमें आप वाटर ये सब लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट, फ्लावर्स आर नॉट वेरी फार. Okay, third point, flowers are far away from each other. ठीक है, कभी कभी मैंने कहा ना प्लांट्स भी अलग हो जाता है, कभी कभी एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स भी अलग अलग हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स लिख दीजिए यहाँ पे. सेल्फ पॉलिनेशन में यू कैन राइट डाउन हिबिस्कस. इधर you can write down sunflower. जिसमें भी दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं आप लिख सकते हैं. इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप कि टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और इधर लिख सकते हैं टेक्स प्लेस इन बोथ unisexual and bisexual flowers. ठीक है, examples you can write on papaya, you can write on watermelon, you can write down the other plants which have unisexual flowers. Okay, so examples would come at last over here. ठीक है, आप इसको फिफ्थ पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, बट ट्राई टू एक्सक्लूड द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रेफरेंसेस. यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट बाय राइटिंग द एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लावर? आफ्टर पॉलिनेशन, you have to write down the answer for 7th question. After pollination, the fertilization takes place. ठीक है, because the pollen grains are already there on the stigma, which is going to germinate and forms a pollen tube, and this pollen tube will help in the movement of the male gamete from this pollen tube towards the ovule. ठीक है, you can write down the pollen lands on stigma of, then the pollens germinate
transfers male gamete towards female gamete. ठीक है, towards female gamete. अब क्या होगा? It will germinate, it will help in the fusion of both the gametes by the process of fertilization. ठीक है, which leads to the zygote formation. Okay, which leads to the zygote formation. अभी यहाँ पर क्या लिखना है? आपको लिखना है how does the fertilization takes place, which resulting in zygote formation. ठीक है. Next is describe the various ways by which the seeds are getting dispersed. What do you understand by the seeds are dispersed from one place to another place by various agents like wind, water, insects. ठीक है, humans. कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल है सीड डिस्पर्सल के लिए. ठीक है, अब इसके बाद और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं. स्ट्रक्चर्स के लिए अगर आपको लिखना है तो स्ट्रक्चर्स विच वुड हेल्प इन द वेज बाय विच द सीड्स आर गेटिंग डिस्पर्स्ड. सो द वेज हो सकते हैं, सम फॉलोइंग वेज आर देयर, फॉलोइंग वेज बाय फॉलोइंग वेज. ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ बर्स्टिंग. ठीक है, सेकेंड विंग्स, थर्ड सीड डिस्पर्सल बाय द थॉर्न्स या फिर स्पाइन्स स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स होने के लिए. ठीक है, नाउ the next is about the match the columns, and you could easily match the columns because you have read the chapter and you could match these columns very easily. The first point is the bud. Okay, how you will match the bud? This is column 1, column 2. First is bud. इस बड को आपको कैसे अटैच करना है? ईस्ट से. एंड दिस इज थर्ड पॉइंट. ओके, देन सेकेंड इज आईज को आपको मैच करना है फिफ्थ अटैकर. देन थर्ड इज फ्रैगमेंटेशन. Fragmentation takes place in spirogyra. नेक्स्ट है विंग्स. एक्चुअली ABC है तो आप ABCD लिखिए. विंग्स आप यूज कर सकते हैं कितने? मेपल लीफ में. मेपल. देन E is spores. For the spores you can match to the bread mold. That is fourth point. That is bread mold. Okay, so this was about the chapter. Now few take the correct options are there. The first point is 10th answer number 10. This is MCQ. The reproductive part of the plant is, answer is fourth, flower. This is A.
Then B is the process of fusion of male and female gamete is known as fertilization. Fertilization. Okay, then C is the matured ovary is going to form fruit, and fruit is the option number 4. Then what about D? D here, the spore producing organism is second one, breadwinner. Then E is bryophyllum can be produced using its leaves. Okay, so children, this was all about the class. I will be meeting you all in the next video with the new topic, with the new chapter again. So before that, you have to discuss, you have to complete these question answers in your notebook, and I'll be discussing few more things in the next class. That would be a new chapter. So that's all for today's class.